आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ ए बालासुब्रमण्यन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बाला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और ये ऐसा वक्त है जब आपके गाइडेंस की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सर, सबसे पहले तो एक जो डर लग रहा है, ये सारी जो खबरें चाहे यूरोप से आए चाहे अमेरिका से आए, बैंक्स की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, कितना सीरियस मामला है। और लोग 2008 से जो कंपेयर कर रहे हैं इसे कि 2008 जैसा मामला फिर से होता दिख रहा है। आपका क्या असेसमेंट है? आपने वो समय भी बड़े नज़दीकी से देखा है, पहले भी इस तरह के उतार चढ़ाव काफ़ी आपने देखे। क्या व्यू बन रहा है सर इस पूरी समस्या को देखते हुए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक 2008 क्राइसिस और आज का देखते हैं क्लियरली। जो 2008 में जो हुआ था, देयर इज अ कंटेंजिंग इफेक्ट वाज वेरी वेरी हाई, क्योंकि एक कोलैप्स करने से व्हिच केम एज अ सरप्राइज, एंड वो बेसिस पे जो पूरा लिंकेजेस था, बिकॉज वाइडली स्प्रेड कंपनी व्हेन द लेमन ब्रदर्स हैपेंड, देन उसको कोलैप्स होने से जो कंटेंजिंग इफेक्ट जो होल बैंकिंग सिस्टम में था was actually quite high. But आज के दिन पे आप देखते हैं, contagion effect, I think for the rest of the world मेरे हिसाब से बहुत कम रहेंगे। तभी आज के दिन पे जो यूएस में देख रहे हैं, the collapse of SVB बैंक and the other banks का, जो रीजनल बैंक्स का जो इशू चल रहा है, एक तो क्विक रिएक्शंस के हिसाब से उनको इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, उसके हिसाब से जो स्टेप लिया हुआ है एक्चुअली, therefore यही कंटेंट हो सकता है। सेकंड इज इट्स मोर ऑफ यूएस लोकल प्रॉब्लम। आई थिंक दिस आल्सो, इसमें ये भी अपने को एक सीखना बनता है। जिस हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना देश में द लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इतना बैंकिंग सिस्टम को टाइट करके इतना मजबूत बनाया है, और अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क का इतना बढ़िया लास्ट 4-5 साल से हर डिसीजन जो लेते हैं, ये सिस्टमिक रिस्क के हिसाब से जो बैलेंस शीट जो बनाया है एक्चुअली दिवे आज के दिन पे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में अपना देश में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बनाया, एसएलआर जो है, सीआरआर है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, और हिसाब से लैंडिंग के हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी है। दिस आर ऑल समथिंग एक्चुअली इज वेरी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड। आई थिंक वन मस्ट गिव क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस, एंड वन मस्ट आल्सो गिव क्रेडिट टू गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉक्टर शक्तिकांत दास एज वेल, एंड अर्लियर गवर्नर्स जो बनाया। Whereas यूएस में उसको कंपेयर करने से डेफिनेटली दे आर इन अ वीक पोजीशन। उसके हिसाब से अगर कोई भी डिसीजन उनको लेना है, तो आज का जो बैंक फंडिंग के हिसाब से जो कर रहा था, बिकॉज दे यूज्ड टू फंड मनी सेक्टर्स, द कंटेंजेंट इफेक्ट्स इज मोर देन बैंकिंग सिस्टम में। एक शायद जो पहले जो फंडिंग जो इजीली अवेलेबल था, दैट विल कंप्लीट डिराइव। सेकंड इज PE फर्म्स हैव ग्रोन क्वाइट सिग्निफिकेंटली। हेज फंड्स, PE फर्म्स इन यूएस में बहुत मशरूम की तरफ से बहुत कुछ आ चुका है एक्चुअली। दे हैव बीन द फंडर ऑफ द ग्रोथ। द एसवीबी बैंक्स का प्रॉब्लम होने से जो स्टार्टअप कंपनीज का जो एकदम जोर से स्टार्टअप कंपनीज का इन्वेस्टमेंट्स जो पैसे जो आते थे, all those things I think will go to a back seat. I think next 1.5 years जो पहले जो whatever you used to call it helicopter money, we used to call it as a quantitative easing, एंड उसका वजह से जो यूएस में आई थिंक ज्यादा से ज्यादा जो इम्पैक्ट जो आ रहा है, ऑल सच हेलीकॉप्टर मनी थ्रोइंग एंड क्वांटिटी ईजिंग जो पहले जो किया था, लो इंटरेस्ट रेट रेजिम में बहुत साल से रखा था, आई थिंक उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है। आपको द करंट इंटरेस्ट रेट हाइक जो हुआ यूएस में, मे बी दे हैव टू नाउ लुक एट मॉनिटरी टूल्स जो यूज करके जो आज के दिन में जो मैनेज कर रहे हैं टू हैंडल कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अभी जो बैंकिंग सिस्टम में जो क्राइसिस आया, नाउ इट बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ the Fed is going to react, whether they'll cut the rate to save the banks or keep the rates that is it today to control the inflation. At the same time, they provide liquidity to the bank, so the banks कोई दीवार नहीं होते हैं। This is something I think we'll have to watch out. इसमें खाली एक ही प्रॉब्लम होता है, if US market continues to struggle in getting back, definitely I think it'll keep the volatility, and उसका वजह से the global growth जो funding जो आता था, they'll get take a temporary stop. पर अगर अपना देश के लिए, अपना इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल उसका वजह से असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आर मच स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक एक ब्यूटी अपना एक में देखते हैं, many people don't realize this is the first time ever in India the households are not leveraged too much, the Indian companies not leveraged too much, deleverage किया, लास्ट 4-5 साल deleverage किया है, वो सब actually coming in handy for Indian market, Indian banking financial systems, and in general for the Indian economic growth also.
परफेक्ट। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा ग्लोबल सिनेरियो है। अब सर इस ग्लोबल सिनेरियो में सारी नज़रें अमेरिकी फेड पर है। क्या लगता है सर आपको 22 मार्च को क्या कुछ एक्शन फेड ले सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर और विशेषकर हम पर पड़ने वाला है? आई थिंक फेड का जो आजकल जो एक्सपेक्टेशन जो पहले जो था, इन्फ्लेशन थोड़े से बढ़ने से ही लोग का व्यू चेंज हो गया था, सेइंग अनदर 50 बेस पॉइंट रेट हाइक आ सकता है फेड के हिसाब से। वो मेरे हिसाब से शायद अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो नया जो आया है, दे नीड टू हैंडल इट बिकॉज यूएस व्हाट द वे दे हैंडल इट, वर्ल्ड विल लुक एट देम, उसका नजर वर्ल्ड मार्केट में आ सकता है। एंड आज के दिन पे वर्ल्ड मार्केट से खुद का जो यूएस के जो प्रॉब्लम जो है दैट इज मच बिगर देन व्हाट प्रोबब्ली दे वर थॉट अबाउट इट। वो बेसिस पे जो आने वाला जो पॉलिसी में रेट हाइक की उम्मीद बिल्कुल नहीं होंगे। आई थिंक रेट हाइक नहीं करेंगे, रेट काटेंगे नहीं है, क्योंकि टू अर्ली टू रिएक्ट टू कट द रेट, देयरफॉर मेरे हिसाब से देयर विल बी अ पास। बट द सेम टाइम जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज को जो क्राइसिस का संभालने के लिए जो लिक्विडिटी जो देना है और मर्जर वाला जो करना है, जो स्विफ्ट एक्शन जो लेना है टू सेव द डिपॉजिट ऑन वन साइड, एट द सेम टाइम कंटेंजन इफेक्ट नहीं होने से कैसे कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ऑल दोस थिंग्स प्रोबब्ली विल कम एज पार्ट ऑफ द Fed meeting, which is more to protect the banking industry to come further into trouble, but उसका ही उनको संभालना पड़ेगा जरूरी होगा। इस हिसाब से जो CSVB का जो हुआ यूरोप में, आई थिंक स्विस बैंक already said that they will give about $42 billion liquidity, but ये सब एक्चुअली एक ही इसमें निर्णय होता है एक्चुअली, that problems are genuine, but at the same time the central bankers are willing to step in, पर जो स्टेप करने के बाद उसका अच्छा हो सकता है इमीडिएटली, लगता तो नहीं है इमीडिएटली कुछ टर्न होएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम्स। बट फेड इन माय व्यू विल नॉट कट द रेट, क्योंकि उनका अभी भी जो ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन संभालना अभी भी जरूरी होगा। जो ऑयल प्राइस नीचे आ रहा है, डेफिनेटली ऑफ कोर्स गुड फॉर इंडिया, एंड इंडिया के इन्फ्लेशन के लिए शायद बढ़िया आई थिंक हो सकता है, बट फॉर ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए आई थिंक दे विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लेशन इज इन डाउनवर्ड साइकिल बिफोर दे स्टार्ट कटिंग द रेट। परफेक्ट। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। अब सर एक राय आपसे इंडियन मार्केट्स पर भी लेना चाहता हूँ। हम थोड़ा अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, एफआईज की बिकवाली भी काफ़ी है। क्या व्यू बन रहा है सर इंडियन मार्केट्स पर? क्या हम काफ़ी गिर चुके हैं, करेक्शन ठीक आ चुका है, अभी भी रिस्क काफ़ी है? देखिए अपना मार्केट में अभी भी रिस्क है, क्योंकि एक तो लास्ट 3 साल से इंडिया हैज आउट परफॉर्म्ड ग्लोबल मार्केट, एंड अपना मार्केट का एक अच्छा है, वॉलेटिलिटी अपना मार्केट में बहुत कम है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। जो स्विफ्ट एक्शन जो पहले होते थे दैट कम हो गया है। बट हैविंग सेड दैट, इंटरेस्ट रेट आई थिंक आज के दिन पे अगर इंटरेस्ट रेट वर्सेस अर्निंग्स यील्ड में कंपेयर करेंगे, 10-year बॉन्ड यील्ड इज क्लोज टू अबाउट 7.335, एंड अर्निंग्स यील्ड के हिसाब से अर्निंग्स यील्ड वर्सेस मार्केट यील्ड का देखते हैं अबाउट क्लोज 2%। अगर ये कंपेयर करने से डेफिनेटली equity market right now I can see will remain volatile, remain at range bound। कुछ कंपल्सिव रीजन नहीं होंगे एक्चुअली दैट आप जम करके इक्विटी में खरीद रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट जो मोमेंटम जनरल एक्सपेक्टेशन जो लोग को रहते हैं वो शायद नहीं हो सकते मार्केट पे, क्योंकि द ग्लोबल uncertainty will continue to be a hangover for equity as an investing, because fixed income rates are also high on a relative basis. But at the same time equity this year, our own belief is will be a consolidation year, while equity market will continue to remain volatile through a risk हो सकता है, but जो strong economic जो push जो आ रहा है अपना देश में, जो economic growth recovery के लिए look at sectors like banking, credit growth has been very good, and if you look at the auto sectors, there has been a pickup in auto sales, there is a consumption led growth also seem to be returning. Hospitality sectors continue to see higher utilization rate, including airline industry to see कंज्यूमर का सेंटीमेंट जो है अपना देश को, जो लोग का सेंटीमेंट जो है, और एडेड विद दैट जो गवर्नमेंट को जो पुश जो है ऑन द रिफॉर्म्स, स्पेशली ऑन गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग जो प्लान कर रहा है एक्चुअली ऑन रेलवे से लेके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लेके हर जगह पे जो पुश जो कर रहे हैं, आई थिंक दैट कंटिन्यू टू बी अ सेवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू कम बैक, मे नॉट बी दिस ईयर बिग टाइम, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 year or so. So that's something I see is the driving factor for equity. I think bond market में आज के दिन पे जो इतना मौका जो है, clearly is being higher, the predictability investors के लिए बढ़ जाते हैं on return expectations, the stability जो रहते हैं because of the current crisis, interest rate hike का जो उम्मीद जो पहले था, that I think now come to neutral rate, which again essentially means the
ऊपर जो फिक्स्ड इनकम में आता है, that is a carry for the investors. अगर ये दोनों कंपेयर करके देखते हैं, clearly equity is here of accumulation and fixed income is actually is a asset class to buy big time. अरे वाह, तो बाला सर ने तो दोनों ही एसेट क्लास को बड़ी नज़दीकी से पिछले 30-35 साल से देखा है, फिक्स इनकम और इक्विटी दोनों ही, इसीलिए वो CIO भी है। तो सर का मानना है कि इस वक्त फिक्स इनकम बहुत अट्रैक्टिव है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, वहाँ पर भी आप पैसा लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। सर क्या कुछ पसंद है मार्केट में आपको, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ आप बुलिश हैं? I think clearly mainly the local economies, basically the capital goods sector, I think in our own belief is मेरे हिसाब से continue to have the edge over other sectors. Consumer durable sector का भी जो हिसाब से agriculture crop output जैसा लाया है, actually the rural economy continues to be one of the driver of the economic growth. जो government social spending हिसाब से जो wealth distribution जो हुआ, actually all put together, मेरे हिसाब से consumer durable sector should also have some edge over consumption led theme. मेरे हिसाब से इंडिया में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क भी बहुत कम है, more of a local theme भी है। तीसरा एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर अभी जो सेलिंग जो है उसका वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है, देयर इज नो डाउट। और उसका कारण भी ये है दैट ओवरवेट इन द सेक्टर बाय मोस्ट ऑफ द मनी मैनेजर ग्लोबली। आल्सो दूसरा एक कारण है एक्चुअली, आई थिंक एट अ प्राइस, I think the banking sectors will also become one of the attractive sectors. And last but not the least, auto sectors, especially passenger vehicles, commercial vehicles, उसमें जो growth जो दिख रहा है actually, mainly because of the economic outcome of these sectors are more in favor of the users or maybe the owners. And economic activities बढ़ने से उनके income भी बढ़ जाते हैं. Therefore, उसका खरीदना भी actually is much better than what you have said last year. And basically, auto sector also in our own belief will have an edge over compared to other sectors. So oil sectors आज के दिन पे जो went through a last 3-4 years of down period, there is also high probability even OMC as a sector would also have a relative edge compared to the broad market. At the end of the day, market में एक ही देखना है, कौन सा sector outperform हो सकता है, despite the sector being very very strong, बस उतना ही अपना कर सकता है at the best.